हाँ जी, so hey class 10th, a very good afternoon to all of you. Such a pleasant day today, and I think इतना अच्छा pleasant day हो तो हमें बहुत सारे questions करने चाहिए, right? बहुत सारी पढ़ाई भी करनी चाहिए. Although बहुत सारे बच्चे agree भी नहीं करेंगे इस बात से कि मैम जब अच्छा सा मौसम हो तो पढ़ने के बजाय खेलना चाहिए. तो नहीं, आई बिलीव कि आप खेलो भी और मस्ती भी खूब करो, लेकिन यस जब आप पढ़ रहे हो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई भी करो, राइट? एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. Okay, so today I'm here back with the topic which is chapter was how do organisms reproduce. But हमने asexual reproduction के बारे में we have already done. हमने वो practice sheet we have already finished. So in this video we are going to discuss about the sexual reproduction. हम उसके practice questions करेंगे. So I think let's get started. Yes, चलो. So where are plant sex organs located? Yes, कहाँ पे located होते हैं? And this sheet is not being done by me, right? So guys, participate in the discussion so that हम जल्दी जल्दी इसको finish कर सकें. हाँ जी, plant का sex organ कहाँ पे located होते हैं? It's in flower. Yes. It's in flower. Yes. Okay. What is the function of a flower? Yes, it's the main reproductive or part of the plant. ठीक है जी? It is the main reproductive part of flower. Oh, sorry, of plant. चलिए. So what are the reproductive organs in a flower? कौन से organs होते हैं? क्या मुझे कोई नाम बताएगा उसका? Yes. Yes, stamen. Very good. हाँ जी, stamen and very good. Stamen and pistil. Very good. Very good, beta. Sheetal, I must tell you, you have shown a very good improvement. I am really happy. At least you have started up speaking the answers, and that is such a good thing to see. But you make me feel smile, right? Chalo. What is the name of the male part of a flower? Yes, Tanisha, male part कौन सा था? मैंने क्या hint दिया हुआ है? Yes, male part of the flower. Yes, it is stamen. Very good. And what about the female part of a flower? Yes, it's carpel, right? Okay. Now, Dipanshu, it's your turn, beta. What is the name of the female organ of a flower? But you don't have to tell me carpel. आपने carpel का ही दूसरा नाम बताना है. So, what is the other name for carpel? Yes, beta. Carpel का दूसरा नाम क्या है? It is pistil, right? Pistil. Yes, it is pistil. Okay. What is the other name of the sex cells? हम उनको किस नाम से जानते हैं? Yes. क्या? What is the name of the sex cells? Ma'am, your voice is not clear and It is gametes. Okay, what is the name of sex cells other than gametes? उनके अलावा क्या नाम होता है? Gametes के अलावा क्या नाम होता है? Yes, बेटा. Let me check the connections. Just a second. Yes, I think now it's fine. One of my app was there, opened up, so it was consuming the thing. So that is why my voice was cracking. Okay, what is the other name of sex cells other than gametes? हमने gametes तो ऊपर बता दिया. तो इसके अलावा और कौन सा नाम होता है? Any idea? No, you can't have. I know. आप भूल गए हो. It is germ cells. Yes, ये वाले germ they are not disease causing. Okay. Otherwise हम germ से तो हमारा वही लेना देना होता है यार, बीमारी करने वाले. Okay, name the male and female gametes in animals. Animals में क्या क्या होता है? Yes, male. Female and male sperm. Yes, it is sperm. So male gamete क्या है बेटा जी? Sperm. Very good, Sheetal. And female gamete है? Yes, very good. Tanisha, very good बेटा. Female gamete हमारा क्या हो गया बेटा जी? Egg या फिर ovum. Okay, हम कोई भी नाम दे सकते. Just a second. Okay, next. Where is the male gamete formed in humans? Humans में male gamete कहाँ बनता है? Yes, Dipanshu, are you there बेटा? yes, ma'am. हाँ जी बेटा, बताएंगे आप मुझे? 9th question, where is the male gamete formed in humans? Humans में कहाँ बनता है male gamete?
Angiosperm. In testes, right? It is formed in testes. Okay. And what about in flowering plants? Flowering plants में कहाँ बनता है? हाँ जी मैम. Flowering plants में male gamete कहाँ बनता है? Where is male gamete formed in flowering plants? Ovary. Ma'am, angiosperm. नहीं, एंजियोस्पर्म तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम होता है. इट इज एंथर. ओके, एंथर, राइट? And Yes. Now we will move on to question number 10, which is where is the female gamete formed in humans? Humans में female gamete कहाँ बनता है? Yes. ये तो एक second. Ovary. ovary. Yes, very good. It is ovary. Okay, and in flowering plants, same ovary. Okay, it's the same, right? Now, the next question is name two animals which undergo external fertilization and two animals which undergo internal fertilization. Yes. Now tell me. आपने दो एनिमल्स ऐसे बताने हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और दो ऐसे एनिमल्स बताने हैं which undergo internal fertilization. अब what was external fertilization? It was when the fusion of the male and female gamete takes place outside the female body. So वो किसमें था? Fishes and yes, frog. Okay. Then two Yes, animals ma'am. which undergo internal fertilization. Internal fertilization means the fusion, the fertilization process is taking place inside the female body. So उसमें it is humans, dogs, right? Right? Still. Define sexual reproduction. Yes, The but production of a new living organism by combining genetic information from two individuals of different type of sex. okay. So अगर हमने इसे नॉर्मल भाषा में समझाना है फिर कैसे करोगे? अगर आपने मुझे सिर्फ इसको समझाना है तो कैसे समझाओगे? No doubt your definition is too ये अच्छी definition है. Okay, Dipanshu, can you redefine this statement in your words? Yes, beta. It is the process of producing offsprings, right? After the fusion of male and female gametes. ठीक है जी? Yes, ma'am. आपके वहां से आपके एंड से शोर आ रहा था इसलिए आई म्यूटेड यू. ओके, डोंट टेक इट इन अदर वे. कुछ और आवाजें आ रही थी. ओके. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू इंडिविजुअल्स लाइक ह्यूमंस? क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं which give birth to individuals like humans? No, right? सभी तो ऐसा नहीं करते. They have different ways, right? Okay. Now you have to next question है write the forms of the following as they occur in biology. आपको कुछ shortened form दी गई है, so इसे आपने expand करना है. So number one is STD. ये हमने बात की थी. Yes, it was sexually transmitted diseases. Okay. Yes बेटा, इसे याद कर लेना अच्छे से, right? Then you have AIDS. It is acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है जी? And last one is HIV. HIV is yes बेटा human virus. Okay. Now the next 16th question. What is the causative organism for the following diseases? अब ये जो हमें कुछ diseases बताई जा रही हैं, इसका आपने causative organism बताना है. मतलब इसको कौन cause कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है, वायरस कर रहा है, प्रोटोजोआ कर रहा है, कौन कर रहा है? गोनोरिया, ये मैंने स्पेशली लिखवाया था कल.
It is bacterial disease. Okay, ये तीनों जो हैं, these all three diseases, they are STDs. Okay, right beta? So gonorrhea is bacterial. Syphilis, it is also bacterial. Okay beta? And AIDS is viral. Yes, clear? Okay. What are the organs in humans which produce the gametes? हम उन organs को क्या बोलते हैं जो gametes produce करते हैं? Yes, beta. Any idea? They are gonads. Okay. Yes, ma'am. Okay. What are the male sex cells in human called? हम उन्हें male sex cells को क्या बोलते हैं? Sperms. Right. Next, name the organ which produces male sex cells. कौन सा organ बनाता है? It is testes. Right. Yes. Testes. Okay. Next, what are the female sex cells in humans called? Female sex cells को क्या बोलते हैं? They are called as ova. Right. And the organ which produces it is ovary. Right. Right. Now, which part of the human body produces sperms? देखिए same question है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा के दिया. So I want कि आप ये सारे questions को करें ताकि आपको different formation of questions का भी idea रहे, right? So कौन सा part होता है human body का which is producing sperms? It is testes in males and produces ova. It is ovaries in females, right? ओके अब देखिए, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें जो आंसर था उसका उल्टा कर दिया है उन्होंने. देखना 20th क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डू द टेस्टिस इन अ मैन प्रोड्यूस? क्या बनाते हैं वो? यस बेटा, व्हाट डज अ टेस्टी प्रोड्यूस? यस बेटा जी, ये तो आता है हमें आंसर, मेल गैमीट सेल या फिर स्पर्म्स, राइट? एंड व्हाट डू द ओवरीज इन अ वुमन प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस ओवा और eggs, right? Okay. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, where in a human body does an ovum get fertilized? fertilize कहाँ पे होता है? ये मैंने आपको याद करवाया था, आप देखती हूँ कितने बच्चों को याद है. यस बेटा, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती थी? कौन सी जगह थी वो? यस यस, अरे भाई कोई आइडिया, कुछ भी, कुछ एक वेग गेस वर्क ही करो. F से फर्टिलाइजेशन, F से फेलोपियन ट्यूब्स, राइट? फेलोपियन ट्यूब्स या फिर हम बोलते हैं ओविडक्ट्स. ओके, एंड दे आर फाउंड इनसाइड द फीमेल बॉडी. इट्स अ फीमेल पार्ट. ओके, इन है नेक्स्ट, वेयर डज अ फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप इनटू अ बेबी इन द ह्यूमन बॉडी? उसकी डेवलपमेंट कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस इन यूट्रस. ओके, next question, name the liquid that contains sperms. The liquid is semen. क्या? Semen, the liquid which is having, जो हमारे prostate gland और seminal vesicle से जो lubrication के लिए fluid secrete out हुआ था, वो sperms के साथ मिलके it makes a semen. milky white appearance होती है. So what is the name of the process in which thickened uterus lining along with blood vessels is removed from the body of a female human female through vaginal bleeding? क्या नाम था इसका? Menstruation. Okay, when the ovum is not fertilized, then obviously the changes they get reversed up. तो उनको reverse करना जरूरी हो जाता है changes को. So that is all shed off. वो सारी preparation को हटा दिया जाता है and the process is known as menstruation. Okay, अब है, for how much time does menstruation last in human females? It's around 3 to 7 days. And what's the frequency? It's monthly frequency, right? Once in a month. Okay, now you have to just tell me the fill-ups. Clear? चलो जी, अब हम start करते हैं, फटाफट बताते जाना. चलो जी. Pollen grains contain dash gametes of a plant. Pollen grains में कौन सा gamete होता है? Male या female? Yes? Ma'am, male. Male. Very good. Ovules contain dash gametes of a plant. Ovules में कौन सा gamete होता है? Male तो आ गया, तो क्या बचा? Female. Yes. Okay.
The ovary of a flower becomes dash after fertilization. Fertilization के बाद ovary का क्या होता है? वो किसमें बदल जाती है? Ovary gets transformed into fruit, and the ovary becomes a fruit. I think it's the same question. Flowering plants reproduce by dash method of reproduction. Sexual, right? Next. The female organ of reproduction in the flower is the, yes, pistil. Next, the male organ of reproduction in the flower is, yes, it is stamen. Okay, name the structure of the flower in which male gametes are formed. It is anther. The dash at the base of the carpel contains egg cells. Carpel के base पे क्या होता है? Ovary. The term used to refer to the transfer of pollen from the stamen of one flower to the carpel of another flower of the same species. The thing is same species, तो हम उसको pollination बोलते हैं, but कौन सी pollination होगी? Self होगी या फिर cross होगी? बताओ. Same species. Another flower है बेटा, ये देखो हमने बोला one flower से लेके another flower, तो yes, it is cross pollination. Very good. It is cross pollination. Very good. Next, the cells involved in reproduction, sexual reproduction, they are called, yes, gametes. The fusion of gametes giving rise to a single cell called, जो single cell बनता है उसे क्या कहते हैं? Zygote. Yes, zygote. Next is the process of fusion of gametes is called, जब gametes fuse होते हैं तो उस process को हम क्या बोलते हैं बेटा? It is called, अरे, fertilization. Okay. A union of a sperm nucleus with an egg nucleus is known as, बेटा अब मेरे यहाँ पे range is full, मतलब अब I have done all the arrangements और nothing else is working, so I don't think so कि मेरे end से कोई issue है. A union of a sperm nucleus with an egg nucleus is known as, जब ये union हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? It is again called as fertilization. हमने इसमें जो gametes हैं उनको अलग अलग करके mention किया है, that is why वो जो fill-up है वो इतना आपको lengthy लग रहा है. The union of a sperm nucleus with an egg nucleus is known as, yes, same thing है, right? It is fertilization and it results in fertilized egg. Okay, हम यहाँ पे zygote egg नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना. Zygote is also known as, the menstrual cycle is controlled by hormones. Right? Okay, so with this we finish off our very short question answers. Okay, yes.